term China plus one. We don't want to be plus one. We want to be the dominant player in the world, and we have all the ingredients to be that. और अगर हमें ये करना है तो there are two things to become that we need to focus on going forward. One is vertical integration. We've been very strong on yarn, we've been very strong on fabric, but now we need to get that dominance on garments as well. Bangladesh and Vietnam have succeeded in doing that, but in all my conversations with buyers, they are saying that we are saturated in Bangladesh, we are saturated in Vietnam, we are looking for more capacity from this part of the world. And India has to rise to the occasion, and I'm very happy to say that the state governments, especially the state of Gujarat, the central governments, are coming up with all kinds of policies to help us do that. So us entrepreneurs have to rise to the occasion and develop this missing link for us to dominate the textile industry. The second huge opportunity is technical textiles, which I will talk about a little more. MMF and technical textiles. Huge amount of innovation is happening there. Huge amount of progress on polymers, on fibers, on applications. So there is no, and with the kind of intellectual firepower that the scientists of India have, the managers of India have, today, there are so many heads of Fortune 500 companies that are Indian. There is no dearth of talent in this country. And so I do not believe that there is anything short of dominance to be had, even in the technical textile space. Now there is another major change that is happening around the supply chain. First, there used to be a nomination model. You know, big brands like Gap or Levi's would say, I will buy fabric from you. Please send it to this garment converter in Bangladesh, and this is my logistics and forwarding company. Now the change that is there is that brands are looking at us, at the supply chain, to do everything. You design the product, you tell me what is going to sell in the future, you manufacture it all the way from sourcing the fiber to making the finished garment. You handle my logistics, you keep a warehouse in my market, and you stock my shelves when I need it. And the players that are going to be able to do that are going to win more and more. And I think this is going to even come to the Indian domestic market. So increasing our strength across the supply chain is going to become important, whether we are a very large company or even a small MSME. We'll have to change our thinking. Gone are the days that we can just put one loom shed and expect that will give us return. So we will have to keep pace with this change. Also, with automation, innovation coming in, Asia alone as a manufacturing hub is going to change. We're already seeing with fast fashion players like Zara having supply chains around the Mediterranean region. So nearshoring is happening. There are 2 garment factories as we speak, one in France and one in Germany, that are going to make denim garments because of highly automated lines. So all this change, we will have to keep one step ahead of it. Consumer is also changing. 5 years ago, हम सोच भी नहीं सकते थे कि कपड़ा छुए बिना खरीदा जा सकता है. Textiles was a very touch and feel kind of buying experience. But now almost 30 to 35% of all textile buying or all garment buying happens online. And this has been a sea change. And this represents automation, fast replenishment, last mile value addition. All these opportunities are available because the consumer is thinking differently. Consumer is also now thinking about things like sustainability. They are thinking about stories. Initially, a good product was all that you needed. Then you had the logo
that signified affluence. Now you have Instagram likes and what your friends think about you in those clothes on social media. So this whole transformation is happening, and if we don't keep the consumer in mind and adapt our business model to the changing needs of the consumer, there is a chance to be left behind. So we need to think very deeply. Is our manufacturing telling a good story? Is it planet positive? Does it cater to the needs of the next generation who on one side of the pole, on one pole, love fast fashion, and on the other side are deeply wedded to sustainability? So it is a very complex landscape, and we will have to navigate this complex landscape. Cotton, which has been India's very, very strong positive, is losing somewhat its prominence in the world. Of course, it will always be relevant, but the innovations coming in man-made fiber are happening at such strong pace, and they lend themselves to circularity, to durability, to higher functionality, that we can no longer only depend on cotton. So we need a two-pronged strategy. On one side, we need to adopt MMF. And I think the government is doing a great job. They've come up with a lovely PLI policy that is encouraging investment into man-made fibers-based manufacturing. Also, technical textiles is full of man-made fibers. So, taking advantage of the strong will on the part of the government to better our position globally on MMF must be taken advantage of. And we have to, as industry, shed our inhibitions and our affinity to only cotton. That is one side of the story. The other side of the story is to improve our cotton supply chain. We need to do a lot of work with farmers, with agriculture, with better seed quality, with higher yields. India's productivity is on the low side. We need to become the most productive farm landscape for cotton if we are to remain competitive. So this two-pronged strategy with the fiber mix that is changing globally is extremely important. This is a topic very, very close to my heart, sustainability. I have 2 degrees in ecology, and I follow this subject very closely as part of many global organizations and their boards. And if you look on current trajectory, we are almost going to miss our carbon reduction target by 50%. There is a target given to each industry that you have to reduce carbon by so much by 2030 so that the global temperature doesn't rise beyond 1.5 degrees. On current trajectory, we are going to miss it by 50%. And I think this is an opportunity too, because the companies that prepare for this first and the geographies that prepare for this the first, there's already a legislation in Europe where traceability is going to become paramount. And what happens in Europe or what happens in America follows after some time in India also. So sustainability is going to become important to the next generation of India. If I'm speaking to college students, school students, they really care about this. And so for us to leave the planet in as good, or at least not in worse shape than what we found it, becomes paramount. And textile industry, after steel and power, is one of the most carbon and water intensive industries globally. So we have a lot of work to do, and we all need to come together and not ignore this fact. Again here India, in terms of its legislative framework, is strong. I mean, ZLD is mandated in so many places. So we have a head start. And brands are looking at us more favorably. The global consumer is looking at us more favorably than many other manufacturing locations from this ESG perspective as well. So this is a huge opportunity.
And then finally, I club technology, innovation and technical textiles. There is so much advancement in digital, in machine learning, in augmented reality, in green chemistry, that we are now starting to see fundamental shifts. There are technologies available which skip entire steps. You can go directly from yarn to a garment. You can dye fabric without using water. Things that we would have thought were science fiction 10 years ago are now possible. So, for the Indian entrepreneur, for Indian industry, we should take the lead in adopting this. Today, MMF, the home of MMF is considered to be Taiwan, Korea, Japan. I think we have more intellectual firepower, and we must take that mantle of being the leader in innovation in textiles, and especially in technical textiles. And the opportunity is massive. Yesterday only we were discussing that today India's export in technical textiles is only 2%. So we are starting from a very small base. But I believe that we are a sleeping giant. And if we do 4 things well, build verticality, focus on sustainability, embrace man-made fibers, and think about technical textiles. And technical textiles take some time, but the rewards, in my own experience, having invested early, are disproportionate once you have waited out that initial period. So if we do these 4 things, plus we have a government that is very, very focused, never before has so much attention and effort been given to textiles. We have the National Technical Textile Mission. We have the PM Mitra of making these large industrial parks where a whole ecosystem of manufacturing will be available. There is PLI. There is huge amount of funding for training and talent development. So the invitation is that please take advantage of all this great enabling environment, both at the center and at the state. And let us all together make India not China plus one, but India as a dominant player in the textile industry. Thank you very, very much. Jai Hind. Thank you very much for sharing the insights, sharing the knowledge, Mr. Punit Dalbhai. Thank you. Moving on to our next session, which is the award presentation. There are few very important awards that we would like to present, and for that I would request our chief guest, CM sir, kindly come forward. First of all, the honorary membership award goes to Dr. Seshadri Ramkumar. Can we join our hands, ladies and gentlemen? He is a professor, Texas Tech University, USA. CM सर को रिक्वेस्ट करेंगे अवार्ड्स देने के लिए. I would also request Darshana ma'am, please join. Dr. Seshadri Ramkumar, Professor, Texas Tech University, USA. The next award, Honorary Fellowship Award, goes to Dr. M.S. Parmar, Director, Nitra. Let's join our hands, ladies and gentlemen. The next service gold medal goes to Shri H.S. Patel, President, Thai Ahmedabad Unit, Member of Parliament. I would request Srimati Darshana ji, please hand over the next award to Mr.
V.A. Bhajikar, Managing Director, Global Organic Textile Standard, GOTS. He is not present right now. On his behalf, I would request Mr. Rajiv Ranjan, President, Thai Mumbai Unit, kindly come forward. Congratulations. I would request Dr. A.I. Thakkar, Head Department of Textile Technology, kindly come forward. The award service mementos goes to Dr. A.I. Thakkar. The next award, which is the Best Unit Trophy, goes to Thai Ahmedabad Unit. All office bearers kindly come on the stage to receive the award. Congratulations to the entire team. Thank you. The next award is for award to Young Industrialist, and that goes to Shri Punit Lalbhai, Executive Director, Hon'ble Limited. Can we have a round of applause, ladies and gentlemen? Congratulations. Check. All right, now this is the moment we all have been waiting for. Allow me to welcome the men with simplicity yet high values and moral, how to live life, giving the inspiration to not only everyone, but especially the youth of the nation. Ladies and gentlemen, put your hands up, put your hands together for none other than the Honorable Chief Minister of Gujarat, Shri Bhupendra Bhai Patel. Okay, there is a little change in the flow, but it is definitely an honor for us to have Darshana ma'am. Well, she doesn't need any introduction. She is my role model, I must say. Every time when I invite her, she has a great smile on her face, and what a graceful personality she is. Wearing 6 yards of clothing and giving the great example to the youth, especially the girls out there. Thank you so much, ma'am. The stage is all yours. Thank you. टेक्सटाइल एसोसिएशन ऑफ इंडिया की ओर से आज आयोजित इस कार्यक्रम में उपस्थित हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री, जिन्होंने एक रिकॉर्ड कायम किया है गुजरात के लिए 156 सीट का, एक बार ताली से उनका स्वागत करें।
शायद दूसरी बार मुख्यमंत्री बनने के बाद में टेक्सटाइल के कार्यक्रम में पहली बार आए हैं। और आरके वीर जी जो अभी स्टोरी बता रहे थे लायन की, तो मैंने उनसे परमिशन ले ली है। शायद कि हमारी बातचीत हिंदी में होगी तो अच्छा कंफर्टेबल रहेंगे हम लोग। वैसे तो अहमदाबाद में कार्यक्रम होता है तो गुजराती सबसे बेस्ट लैंग्वेज है। जब से प्रधानमंत्री जी और अमित भाई दिल्ली आए हैं तो सब लोग केम छो मजामा छो करता थया है। जिनके आग्रह से मैं यहाँ पे आई हूँ, अहमदाबाद एसोसिएशन जिनको अवार्ड मिल चुका है यहाँ पे, और पूरे 26 एसोसिएशन में से बेस्ट एसोसिएशन के नाते मेरे सांसद के साथी और जो अहमदाबाद की इंडस्ट्री को आगे ले जाने के लिए बहुत इंटरेस्टेड है। और कल भी हमारे टेक्निकल टेक्सटाइल में उनके दिमाग में वही बात चल रही थी कि अहमदाबाद को टेक्निकल टेक्सटाइल में कैसे मैं टॉप पर ले जाऊँ। आज भी उनकी सोच यही है। तो एक बार एच.एस. पटेल जी के आग्रह से यहाँ पे हम लोग दोनों उपस्थित हुए हैं। ये पटेल वाइस प्रेसिडेंट, पुनीत भाई जिनको अभी यंग एंटरप्रेन्योर का अवार्ड मिल चुका है। उनकी एक चीज मुझे बहुत अच्छे से याद है। जब मैं मंत्री बनी उसके बाद में तय हुआ था कि गुजरात में जो टेक्सटाइल का सेक्टर अनऑर्गेनाइज है, तो चैम्बर ऑफ गुजरात ने बहुत अच्छे से एक 5-6 सक्सेस स्टोरीज के लिए सबको इनवाइट किया था कि कैसे इंटीग्रेट होके लोग एक दूसरे से सपोर्ट से अपने एक्सपीरियंस से वो बातें शेयर करें जिनसे टेक्सटाइल इंडस्ट्री को हम लोग आगे ले जाने में सफल हो पाए। और कल भी जिस तरह से हमारे मिनिस्टर पीयूष जी के साथ हम लोगों ने एक इंटरेक्शन रखा था सीईओ के साथ में, यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं, अमित भाई भी यहाँ पे बैठे, अग्रवाल जी, पुरी जी भी आए थे वहाँ पे। तो बहुत अच्छा आउटकम निकला। अमृत मंथन जैसे अमृत काल, आजादी के अमृत काल में 100 साल बाद 47 इयर्स आजादी के बाद में जो भारत का होगा आत्मनिर्भर भारत की ओर, उसको ले जाने के लिए कौन से सेक्टर में कैसे सपोर्ट चाहिए, इसके बारे में हम लोगों ने जब सोचा तो अपने विचार उन्होंने आइडियाज बहुत अच्छे तरीके से रखे। जो इंडस्ट्री चाहती है या टेक्सटाइल मिनिस्ट्री की ओर से हम लोगों ने सोचा है, और भी डिग्निटरीज है, एमएस पटेल जी डायरेक्टर इंडोरामा के, जो भी यहाँ पे आपके और पूरे जो आपका सेशन चलने वाला है, इसमें आगे वाले समय में आप लोग बहुत कुछ अमृत मंथन निकाल कर इसमें से आउटकम सरकार को मददरूप हो जाए ऐसा आप कर पाएंगे। जैसे मैंने बताया कि प्रधानमंत्री जी की सोच यही थी कि जब टेक्सटाइल इंडस्ट्री को की जिम्मेदारी हमें सौंपी गई तो पहली बार ऐसा हुआ कि टेक्सटाइल इंडस्ट्री अकेले कोई डिसीजन नहीं ले सकती, क्योंकि उनको फाइनेंस के ऊपर डिपेंड होता है। जिस तरह से पुनीत भाई ने अभी बताया, कॉटन बेस्ड इंडस्ट्री पूरी वर्ल्ड में हम लोगों की इंडिया की इंडस्ट्री कॉटन बेस्ड इंडस्ट्री थी, तो उसको किस तरह से बेस्ट क्वालिटी के कॉटन के साथ में, और हमारा जितना भी प्रोडक्शन होता है, और खास करके अहमदाबाद जो मैनचेस्टर जो उनकी स्टोरी बताई गई कि पहले जितनी भी मिल वगैरह थी वो कॉटन के ऊपर डिपेंड थी, और कॉटन की क्वालिटी के साथ में हम कैसे कम्पीट कर पाए। और इसमें मैं एक बार फिर से मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद दूंगी, क्योंकि जिस गुजरात को छोड़कर नरेंद्र भाई गए थे और वहां पे जो सेक्टर में सबसे ज्यादा करने की जरूरत थी, तो स्पिनिंग से लेके कॉटन का ग्रोथ बढ़ाने के लिए जो भी इनिशिएटिव लिए गए, जिसमें कॉटन इंडस्ट्री के साथ जब भी अभी डिस्कशन हुआ तो सबसे ज्यादा रोल कॉटन के लिए भी गुजरात महाराष्ट्र का रहा। तो गुजरात में जो इकोसिस्टम डेवलप हुई है कि कोई भी योजना केंद्र सरकार की बनती है उसमें टेक्सटाइल कैसे सपोर्ट करेंगे, कैसे राज्य सरकार उनका रोल अपना निभाएंगे, तो बहुत अच्छे से आगे हम दोनों साथ में मिलजुल कर आप लोगों के लिए काम कर पाते हैं। सबसे ज्यादा जो फोकस हम लोगों ने किया है मैनमेड फाइबर के ऊपर, जो पूरे देश में हम लोगों का रोल 25% ही है ग्लोबल मार्केट में, और इसको 75% तक ले जाना। पूरी दुनिया मैनमेड फाइबर 75% यूज करती है, लेकिन हम लोग इसमें बहुत पीछे थे। तो इसके लिए जो योजना बनाई गई, मैनमेड फाइबर, टेक्निकल टेक्सटाइल और रेडीमेड गारमेंट्स, 3 सेक्टर के ऊपर फोकस करके सरकार ने जो पीएलआई स्कीम बनाई, और पीएलआई स्कीम के माध्यम से मैन्युफैक्चरिंग में बाहर से इन्वेस्टमेंट आए, अच्छे से बड़े प्लेयर्स आए, और उसके साथ में हम लोग क्वालिटी प्रोडक्शन से, इकोसिस्टम से प्रोडक्शन की कॉस्ट कम करके कैसे आगे हो पाए, इसके लिए हम लोगों ने बहुत तैयारी कर ली। और 10,863 करोड़ की जो पहली पीएलआई स्कीम आई, जिसमें 67 प्लेयर्स आए,
और मैं बहुत मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद दूंगी। 7 प्लेयर्स इसमें से गुजरात के हैं, तो गुजरात कहीं पे भी पीछे नहीं है। दूसरा जो टेक्निकल टेक्सटाइल के लिए अभी जो दोनों लोग अभी चिंतित है, पुनीत जी और हसमुख जी, और जिसका कल भी बहुत अच्छे से डिस्कशन हुआ, तो उसके लिए भी सरकार ने टेक्निकल टेक्सटाइल के 11 कंपोनेंट्स है, जिसमें सबसे ज्यादा रोड के लिए बनाए जाने के लिए रेलवे में यूज होगा, जियो टेक्सटाइल के यूजेस कैसे बढ़े, मेडिकल में कैसे बढ़े, मेडिकल यूज के साथ में कल डायपर्स वालों की भी बहुत सारी डिस्कस हुई, क्योंकि हेल्थ केयर में जैसे हम लोग पीपी किट में कोविड के बाद में हम लोगों ने शुरुआत ही करी थी, लेकिन 2 साल में हम सेकंड लार्जेस्ट एक्सपोर्टर ऑफ द वर्ल्ड बन गए। तो इतना प्रोग्रेस हम लोगों ने कर लिया है। और इसके साथ तीसरी जो बात आती है, इसमें जो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट में कैसे जमीन में पानी कम हो जाए तो उसको प्रोटेक्ट किया जाए, जो हमारे मछुआरे जो है उसकी नेट में कैसे उसका यूज हो, स्पॉट्स में सबसे ज्यादा जो फील्ड अभी दिखता है, एक प्लेयर्स ऐसे हैं कि जो कॉटन, हम सरकार की सोच यही थी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सोच ऐसी थी, फार्म, तो फार्म से कॉटन, फार्म से फैक्ट्री टू फैशन टू फॉरेन टू 5F के बेस पे हम लोग काम करते थे। तो इसमें जब वेलवेट फाइबर की या टेक्निकल टेक्सटाइल की बात आती है तो कॉटन बेस बहुत कम रह जाता है, तो फाइबर से शुरुआत होती है। तो उसके लिए पॉलिसी बनाना, इसके लिए जो इंपोर्ट चीज चाहिए या उनको जो सरकार का सपोर्ट चाहिए, जिस तरह से सबसे ज्यादा स्टेक होल्डर के साथ में बातचीत करके हल निकालना, यही ये सरकार की सबसे बड़ी, मैं समझती हूँ, कामयाबी है। क्योंकि जब तक इंडस्ट्री में जो प्लेयर्स है, जो अपने जमीन के ऊपर जो फील करते हैं, उसमें उनको क्या चाहिए, कैसे सिस्टम चाहिए, और पीयूष जी बार बार बोलते हैं कि सरकार का इंटरव्यू सबसे कम होना चाहिए। जैसे जीएसटी के बाद में टेक्सटाइल इंडस्ट्री ने बहुत सफर किया, सूरत से जितना एपी सेंटर हुआ, क्योंकि अभी कपड़ा हमेशा एग्जाम्प्टेड रहता था, तो लोग टैक्स के दायरे में आना नहीं चाहते थे। लेकिन फिर भी जिस तरह से स्ट्रीमलाइन हुई, वैल्यू चेन हुई, एक दूसरे के ऊपर हम लोग डिपेंड होते हैं, तो सब लोग साथ मिलकर अगर काम करेंगे, जितना सरकार का रोल कम होगा, इतना आप लोगों को आसानी होगी आने वाले समय में जो ग्लोबली मार्केट हम लोग को कैच करना चाहते हैं। इसके लिए पूरी रोड टैप की और जो टेक्सटाइल रिलेटेड जो भी टैक्सेस है सरकार के, इसके लिए भी हम लोगों ने मार्च तक ये डेट बढ़ा दी है। सबसे पहली बार ये अमृतकाल बजट के अंदर एक वर्ड यूज किया गया प्रधानमंत्री के माध्यम से, विश्वकर्मा। तो विश्वकर्मा इसलिए आता है कि हैंडलूम, हैंडीक्राफ्ट की चीज, जो हम टेक्सटाइल से जुड़े हुए लोग हैं, जो एग्रीकल्चर के बाद में सबसे ज्यादा लोग को रोजगार देने के लिए हम लोग आगे आए हैं। तो इसके साथ में कैसे उनको भी जस्टिफाई करें। और ऐसे समय में जब G20 के समिट में हम लोग, गुजरात इतना नसीब वाला है कि 4 इवेंट वो ऑर्गेनाइज करेंगे। अहमदाबाद की शुरुआत हो चुकी है, कच्छ ऑफ रण में भी हुआ, स्टेच्यू ऑफ यूनिटी में होगा, एक इवेंट सूरत में होगा। तो चारों जगह पे G20 का फोकस, जब फोकस है, जब शोकेसिंग होने जा रहा है, तो 56 जो अपने बड़े बड़े शहर है, इसमें कहीं से भी राजनीति नहीं है। एक भारत श्रेष्ठ भारत की तरह जहाँ जहाँ हमारी सांस्कृतिक विरासत को दिखाने का जो समय आता है, वहाँ हम दिखाएंगे। क्योंकि प्रधानमंत्री जी की सोच यही है, वसुधैव कुटुंबकम की भावना के साथ में पूरा नेशन एक साथ में आगे बढ़े, एक परिवार की तरह। तो ये लोगों को लेकर हम आगे बढ़े हैं। तो सबसे ज्यादा इसमें जो सपोर्ट मिलता है वो हैंडलूम, हैंडीक्राफ्ट के आर्टिजन को। अब तक की जितनी भी इवेंट राजस्थान में हुई, मुंबई में हुई, गुजरात में हुई, आप लोगों ने देखा होगा कि हैंडलूम, हैंडीक्राफ्ट से रिलेटेड चीजों से जो हमारे जो फॉरेनर आते हैं, जो विदेश से लोग आते हैं, 20 कंट्री से लोग आते हैं, वो काफी उनको पसंद भी करते हैं। और उनको कैसे प्रोजेक्ट में के साथ में हम शामिल करके उनको भी एक अच्छा जीवन दे पाए। तो विश्वकर्मा के नाम से एक MSME, छोटे छोटे सेक्टर को किस तरह से जोड़ा जाए। सबसे ज्यादा जो दिक्कत आती है टेक्सटाइल के साथ में, और मैं अशोक भाई को धन्यवाद भी दूंगी कि यहाँ पे एलडी इंजीनियरिंग के साथ में उन्होंने टाइप किया है कि नई जनरेशन किस तरह से इस फील्ड में आए। टेक्सटाइल के पहले बहुत सारे कोर्स होते थे, लेकिन इस कोर्स में धीरे धीरे इसमें जिस तरह से एक स्टैंडर्ड आ गया, लोग एक्सपीरियंस से ज्यादा सीखने लगे,
जिस तरह से अपना रिसर्च सेंटर भी खुद बना लिया, बड़ी बड़ी कंपनियों ने भी खुद ऐसा कर लिया, लेकिन अगर बड़े सेक्टर को आना चाहिए तो किस तरह से इंजीनियरिंग के साथ में जुड़े हुए हमारे IIT IIM के साथ में कल ये चीज टेक्निकल टेक्सटाइल की वहाँ वो भी डिस्कस हुआ कि किस तरह के कोर्स हम लोग करेंगे, जिसमें सभी यूनिवर्सिटियों को भी लेटर दिया गया है। रिसर्च के लिए भी जो हमारा बजट 400 करोड़ का था उसको बढ़ाकर 1500 करोड़ का कर दिया गया। तो पूरी फोकस इंडस्ट्री के साथ में हम लोग लेकर आगे चलते हैं। तीसरा जो रेडीमेड गारमेंट्स, तो रेडीमेड गारमेंट्स में भी बहुत सारा स्कोप है। हम लोग बांग्लादेश की बार बार बात करते थे, लेकिन हम लोगों ने बात इसलिए क्योंकि हमारी नेबरिंग कंट्री की जो हालत अभी आपने देखी है, खास करके जो हमसे जो पिछड़े थे पहले, तो वहां पे जिस तरह से इकोनॉमी चल रही है और हम लोग ब्रिटेन को पीछे छोड़ के 5वें नंबर की इकोनॉमी तक पहुंच गए हैं। और जब एक्सपोर्ट का टारगेट 400 बिलियन का अचीव करना था, पिछले साल हमने 15 दिन पहले ये एक्सपोर्ट हम लोगों ने अचीव कर लिया। और इसमें हैंडीक्राफ्ट के सेक्टर को जोड़ा जाए, जिसमें सबसे ज्यादा महिला होती है, जो घर पे बैठ के खेत के साथ साथ में घर पे भी हैंडलूम हैंडीक्राफ्ट का काम करती है, तो उसको आर्टिजन कार्ड बनाना, उसको एक कॉमन फैसिलिटी सेंटर देना, एक जैसे काम करने वालों का क्लस्टर इकट्ठा करके उसके साथ में उनको सपोर्ट करना। अहमदाबाद में अगर आप लोग हैं तो यहाँ पे बहुत अच्छा बारिश के पास में जो एप्लिक वर्क वाला एक सेंटर का ओपनिंग अभी हम लोग थोड़ी समय के बाद में, जैसे मुख्यमंत्री जी का टाइम मिलेगा, हम लोग खोलने जा रहे हैं साबरमती आश्रम के पास में। तो एक जैसे काम करने वाले लोगों को एक जैसी वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट, जो यूपी के अंदर भी ये बहुत अच्छा उनका सपोर्ट रहा। स्टेशन के ऊपर भी किस तरह से एक मंत्रालय दूसरे मंत्रालय से कैसे सपोर्ट करे, तो हम लोगों ने आजादी का अमृत काल में 75 स्टेशन के ऊपर छोड़कर 750 स्टेशन के ऊपर हैंडलूम हैंडीक्राफ्ट की प्रोडक्ट वाले लोगों को अपना एक स्टॉल मिल जाए। और इसमें ऐसा नहीं कि एक ही लोगों को ये स्टॉल मिलता रहे, हर 15 दिन 30 दिन के बाद में नए लोगों को इसमें मौका मिलता रहे। इस तरह से हम सिस्टम को एडॉप्ट करके आगे चल रहे। तो ज्यादा मैं समझती हूँ कि यहाँ जितने भी अवॉर्डी हैं, आप लोगों ने टेक्सटाइल इंडस्ट्री ने जिस तरह से रजिस्ट्रेशन करके अपने मेंबर्स को किस तरह से इंडस्ट्री को आगे ले जाने के लिए आप लोग आने वाले समय में हमें मदद करने वाले हैं और ऐसे ही बातें करते रहेंगे। और इसके साथ में चौथी जो हमारी जैसे रेडीमेड गारमेंट का मैंने बताया कि इसमें भी ऑनलाइन कोर्सेज और एक ट्रेनिंग और है जो इंडस्ट्री से हम लोग सपोर्ट चाहते हैं कि इंडस्ट्री वाले लोग अगर कोई महिला को या उसको रोजगार देना चाहते हैं या तो ट्रेनिंग करना चाहते हैं, क्योंकि बहुत सारे इक्विपमेंट आते हैं टेक्निकल टेक्सटाइल में, तो बहुत सारी ऐसी मशीनरी आएगी जिसको आपको ट्रेनिंग करना पड़ेगा। तो इसके लिए समर की ट्रेनिंग है, जिसमें इंडस्ट्री अगर ट्रेनिंग करेंगे उसके हमारे पार्टनर से जुड़ जाएंगे जो ऑनलाइन एप्लीकेशन करनी होती है। और समर ट्रेनिंग के अंदर और हैंडलूम हैंडीक्राफ्ट और सिल्क मैं फिर से भूपेंद्र भाई को धन्यवाद दूंगी, क्योंकि सबसे बड़ी कृषि यूनिवर्सिटी नवसारी कृषि यूनिवर्सिटी के अंदर जितना R&D का काम हो रहा है, जितना हम टेक्निकल टेक्सटाइल के लिए एक पूरा सेटअप तैयार कर रहे हैं आपके सपोर्ट से। और दूसरा इसमें जो तीसरा एक कंपोनेंट रह जाता है जिसके बारे में लोग बात नहीं करते हैं, सिल्क के बारे में, क्योंकि जिस तरह से अंग्रेजों ने यहाँ पे सिल्क की प्रोडक्ट और कोकून लाए थे तो उत्तराखंड और जम्मू कश्मीर में आए थे, लेकिन इसके बाद में उसको कर्नाटक में जैसे 4 से 5 क्रॉप लेके हम लोग सिल्क के प्रोडक्शन में भी बहुत आगे हैं। तो नॉर्थ ईस्ट वाले स्टेट को भी वेस्ट और ईस्ट दोनों का अच्छे से डेवलपमेंट हो जाए, इसकी तरह वहाँ पे भी गवर्नमेंट से आसाम गवर्नमेंट ने बोडोलैंड के साथ में हमने MOU साइन किया है कि जहाँ बहुत सारे गरीब लोग हैं कि जो अपने आदिवासी एरिया के अंदर वो कोकून का अगर प्रोडक्शन करेंगे तो सरकार गवर्नमेंट उसको सपोर्ट करेगी। वो अभी पुरानी टेक्निक से काम कर रहे हैं तो उनको टेक्नोलॉजिकल मदद मिलेगी, अच्छे से नए हैंडलूम हैंडीक्राफ्ट के इक्विपमेंट मिलेंगे, उनको अच्छी ट्रेनिंग मिलेगी, मार्केट मिलेगी। मार्केट को जोड़ने के लिए सरकार ने सबसे अच्छी बातें करी है जेम पोर्टल से जोड़ना, और जेम पोर्टल में रजिस्टर करने के लिए भी गुजरात गवर्नमेंट हमेशा अग्रसर रही है कि जितने भी जेम पोर्टल से हम लोग अपनी चीजों या तो आप रेलवे में कुछ करना चाहते हैं या तो टेक्सटाइल में करना चाहते हैं या तो कोई भी सेक्टर में, प्रधानमंत्री अपने कार्यालय की छोटी से छोटी चीज भी अगर खरीदना चाहते हो तो जेम पोर्टल के माध्यम से, तो पूरी ट्रांसपेरेंसी से डायरेक्ट बेनिफिट
ट्रांसफर से लोगों को हम लोग सपोर्ट के साथ में आगे बढ़ रहे हैं। तो सिल्क में भी सबसे पहले ये मुख्यमंत्री की सोच थी जब नरेंद्र भाई यहाँ थे कि मेरे डांग के आदिवासी एरिया के लोग क्यों कोकून का प्रोडक्शन नहीं कर पाते। तो इसमें भी यहाँ पे 9 साल के अंदर ये सक्सेस स्टोरी हो चुकी है और यहाँ पे भी डांग के अंदर 9 साल के पास में 3-4 एकड़ में सिल्क का प्रोडक्शन शुरू हो चुका है। तो सिल्क, हैंडलूम, हैंडीक्राफ्ट, मैनमेड फाइबर और इसके साथ में टेक्निकल टेक्सटाइल और रेडीमेड गारमेंट्स, पूरे टेक्सटाइल इंडस्ट्री के और एक इंडस्ट्री और छूट जाती है जो बार बार जूट इंडस्ट्री, जो पश्चिम बंगाल बिहार साइड के लोगों को, तो इसमें भी साउथ के एरिया के लोगों को जोड़कर, क्योंकि जूट में टेक्निकल टेक्सटाइल्स को जोड़कर और उनकी प्रोडक्ट को हम लोग जिस तरह से फूड के लिए हम लोग उनको सिक्योर करके वो इंडस्ट्री को सपोर्ट किया है, लेकिन टेक्निकली जितना अपग्रेड उनको होना चाहिए उतना हुए नहीं है। तो उनके लिए भी एक पूरा फोकस करके एक स्कीम बनाई गई है। तो मैं आज फिर से धन्यवाद दूंगी। एक टेक्सटाइल का एक मंच जो अहमदाबाद के मैनचेस्टर में आयोजित किया गया है, वहाँ बहुत अच्छे से आप लोग आजादी के अमृत काल में 75 साल वाले भारत की शुरुआत, क्योंकि नई जनरेशन पुनीत भाई जैसे लोग, नई जनरेशन वाले लोग 100 साल के बाद वाला भारत देख पाएंगे। हम लोगों को नहीं पता कि हम में से कितने लोग 100 साल की सेलिब्रेशन में हाजिर रहेंगे, लेकिन प्रधानमंत्री जी ने लाल किले से एक बहुत अच्छी कविता सुनाई थी जो मैं हर एक जगह पे सुनाती, कई लोगों ने सुनी होगी लेकिन मुझे बहुत पसंद है। यही समय है, सही समय है, भारत का अनमोल समय है, असंख्य भुजाओं की शक्ति है, हर तरफ देश की भक्ति है। तुम उठो, तिरंगा लहरा दो, भारत के भाग्य को फहरा दो। यही समय है, यही समय है, भारत का अनमोल समय है। कुछ ऐसा नहीं जो कर न सको, कुछ ऐसा नहीं जो पा न सको। तुम उठ जाओ, तुम जुट जाओ, सामर्थ्य को अपने पहचानो, कर्तव्य को अपने समझानो। भारत का ये अनमोल समय है, यही समय है, सही समय है। कैन डू जनरेशन जो सब कुछ हासिल कर सकती है, उनके लिए ऑल द बेस्ट। जय हिंद। Thank you very much, ma'am, for all the sharing all the insights and blessings and inspiring words. Now, I think this is the moment. Allow me to welcome the chief guest himself. एक बार जोरदार तालियों થઈ જાય मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल। ટેક્સટાઇલ એસોસિએશન ઇન્ડિયા દ્વારા આયોજિત વર્લ્ડ ટેક્સટાઇલ કોન્ફરન્સ 3ના શુભારંભ પ્રસંગે આપણી સૌની સાથે મંચ ઉપર ઉપસ્થિત કેન્દ્રીય કાપડ તથા રેલ રાજ્યમંત્રી શ્રી દર્શનાબેન જરદોસ, સાંસદ શ્રી એચ.એસ. પટેલ, એસોસિએશનના અધ્યક્ષ શ્રી આર.કે. વીજ, વાઇસ પ્રેસિડેન્ટ શ્રી ટી.એલ. પટેલ, અરવિંદ ગ્રુપના એક્ઝિક્યુટિવ ડાયરેક્ટર શ્રી પુનીત લાલભાઈ, ઇન્ડોરામા ગ્લોબલ ગ્રુપના ચેરમેન શ્રી ઉદય ગિલ, જનરલ સેક્રેટરી શ્રી મહેન્દ્રભાઈ પટેલ, મંચસ્થ સૌ મહાનુભાવો, સમગ્ર દેશમાંથી વિદેશમાંથી પણ છે, દેશ અને વિદેશમાંથી પધારેલ ટેક્સટાઇલ જગતના સૌ અગ્રણીઓ, આમંત્રિત ભાઈઓ બહેનો, પ્રેસ મીડિયાના મિત્રો, સૌને મારા નમસ્કાર। વિશ્વના સૌથી લોકપ્રિય અને આપણા ભારત દેશના વડાપ્રધાન શ્રી નરેન્દ્રભાઈના નેતૃત્વમાં ભારત દેશ અમૃતકાળમાં પ્રવેશ્યો છે અને જ્યારે અમૃતકાળ અને એ અમૃતકાળનું સૌથી મોટું બજેટ ગુજરાતે માન્ય નરેન્દ્રભાઈના માર્ગદર્શનમાં ગઈકાલે જ
ગુજરાતનું સૌથી મોટું બજેટ પ્રસ્તુત કર્યું છે. બજેટ અમારું ખૂબ સારી રીતે કે ગુજરાત અને ગુજરાતની વિકાસ યાત્રા અને આખી વિકાસની રાજનીતિનું નવું અધ્યાય માન્ય નરેન્દ્રભાઈના માર્ગદર્શનમાં શરૂ થયું. અને આજે જયારે અહીંયા બહેન આજે કવિતા વાંચતા હતા તો એ કવિતાના આધારે આપણે કહી શકીએ કે માન્ય નરેન્દ્રભાઈએ જે વિકાસની રાજનીતિ શરૂ કરી, કેટલા કોન્ફિડન્સથી એમણે શરૂ કરી હશે કે આજે તમે કોઈ પણ જગ્યાએ જે પહેલા આપણે જે ઇલેક્શનો જોયા છે તો એ ઇલેક્શનોમાં કેવી રીતે ઇલેક્શન થતા હતા, એના શું મુદ્દા રહેતા હતા, અને આજે તમે આખા દેશમાં ગમે તે રાજ્યમાં નાનામાં નાનું ઇલેક્શન હોય તો એનો મુદ્દો આ વિકાસ ઉપર આવી, ડેવલપમેન્ટ ઉપર આવી, અને એ ડેવલપમેન્ટને ભાર મૂકી અને ગુજરાતે જે વિકાસ ગાથા શરૂ કરી અને આજે એ વિકાસ ગાથા આપણે અમૃત કાળમાં સૌથી અગ્રેસર રહેવા માટે ગુજરાતે એ આ વર્ષના બજેટમાં 5 વર્ષ માટેનું આખું વિઝન કે ગુજરાત કેવી રીતે આગળ વધવા માંગે છે એ આપ્યું છે. અને જ્યારે કોરોના જેવી મહામારીમાં પણ માન્ય નરેન્દ્રભાઈએ આત્મનિર્ભર ભારત અને આત્મનિર્ભર ભારતની સાથે આજે આર્થિક રીતે 5મા સ્થાન ઉપર જ્યારે બીજા બધા દેશો પોતાની પોઝિશન ટકાવવા માટેની મથામણમાં હોય એવા સંજોગોમાં આપણે આગળ વધતા હોઈએ, એ આપણી પાસે આજે નેતૃત્વ છે અને એ નેતૃત્વનો લાભ લઈ અને આપણે સૌ આગળ વધવા માંગીએ છીએ. ટેક્સટાઇલ ક્ષેત્રે આજે ઘણા બધાને અહીંયાથી એવોર્ડ મળ્યા છે, દરેકે જુદી જુદી બ્રાન્ચ કહી શકાય તો બ્રાન્ચમાં બધાને જુદા જુદા એવોર્ડ આજે મળ્યા છે. ટેક્સટાઇલ આગળ વધવા માટે સરકાર તરફથી કોઈ મુશ્કેલી ના પડે એ જોવાની જવાબદારી અમારી છે. માન્ય નરેન્દ્રભાઈએ વાઇબ્રન્ટ શરૂ કરી અને દેશ અને દુનિયામાંથી વેપાર ઉદ્યોગ માટે અહીંયા ખૂબ મોટી સ્પેસ આપી ગુજરાતમાં. અને આજે તમે જુઓ તો આજે વાઇબ્રન્ટમાં અમારે પણ ક્યાંક ફોરેન જવાનું થાય તો એ ફોરેન જઈએ ત્યારે દરેક જણને, દરેક દેશને, વિદેશમાંથી પણ માન્ય નરેન્દ્રભાઈના નેતૃત્વમાં ભારત સાથે વેપાર વધારવો છે, ધંધા રોજગાર વધારવા છે, અહીંયા ઇન્ડિયામાં ઇન્વેસ્ટમેન્ટ કરવું છે. અને ઇન્ડિયામાં જયારે ઇન્વેસ્ટમેન્ટ કરવું છે અને જયારે ઇન્ડિયા આવે છે ત્યારે પછી કયા રાજ્યમાં જવું, ઇન્ડિયા આવ્યા પછી, તો આજે પણ સૌથી ફેવરેબલ જો કોઈ રાજ્ય હોય તો એ આજે ગુજરાત છે. અને આ મજબૂત પાયો આપણે અહીંયા નાખ્યો છે ત્યારે જે અહીંયાથી ટેક્સટાઇલ માટેની વાત છે તો ટેક્સટાઇલ સૌથી જૂના ઉદ્યોગોમાં ટેક્સટાઇલ ઉદ્યોગ આવે છે. બદલતા જમાનાની સાથે ઉભા રહેવું, ગ્લોબલી આપણે બધાએ આગળ વધવા માટે જે કરવું પડે એ કરવું જોઈએ. એમાં સરકાર તમારી સાથે છે એ નક્કી છે કે તમારે ક્યાંય તકલીફ નહીં પડવા દઈએ. તમે જેટલી તમારી તાકાત, અને અમે કહીએ છીએ કે ભાઈ હું જયારે
અમદાવાદ કોર્પોરેશનમાં સ્ટેન્ડિંગ ચેરમેન હતો ત્યારથી કહું છું કે વિકાસમાં જ્યાં સુધી નરેન્દ્રભાઈ છે ત્યાં સુધી વિકાસમાં ક્યારેય રૂપિયો નહીં ખૂટે વિકાસમાં. એટલે જ્યારે પણ ટેક્સટાઇલ ઉદ્યોગને જ્યારે પણ સરકારને સાથે ઉભું રહેવાનું હશે તો ઉભું રહે છે. પણ આજે એક ભારત શ્રેષ્ઠ ભારત, સ્વચ્છ ભારત અને એન્વાયરમેન્ટનું પણ આપણે બધાએ ક્યાંક ને ક્યાંક એન્વાયરમેન્ટને સાથે રાખી એન્વાયરમેન્ટને કોઈ તકલીફ ના પડે, પર્યાવરણનો ખ્યાલ રાખી અને આપણે ધંધાને આગળ વધારવું છે. એટલે આજે તો આપણે બધાએ ચેન્જ જોયો છે. સ્વચ્છ ભારતમાં છોકરાઓ પણ રેપર ડસ્ટબિન ગોતતા થઈ ગયા છે ને ડસ્ટબિનમાં જ નાખે છે. તો આપણે ઉદ્યોગ જગતે એન્વાયરમેન્ટનું પૂરું ધ્યાન રાખી અને આગળ આપણે વધીશું. આજે ત્રીજી અહીંયા આગળ કોન્ફરન્સ મળી રહી છે. આ પ્લેટફોર્મ ખૂબ જ આગળ વધવા માટે આ પ્લેટફોર્મ પૂરું પાડશે ટેક્સટાઇલ ઉદ્યોગને અને આ કોન્ફરન્સની સફળતાઓની શુભેચ્છાઓ પાઠવી અને મારી વાત પૂરી કરું છું. ભારત માતા કી જય. વંદે માતરમ. જય જય. Thank you very much. आज है आपका मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र भाई पटेल. Thank you so much for sharing your views and your blessings. I would request Shri T.L. Patel, Conference Chairman and Vice President, the Textile Association India, kindly come forward for your address, sir. સીએમ સરને આગળના કાર્યક્રમમાં જવા માટે આપણે વિનંતી કરીશું. એમને ખાસ એક મીટિંગ છે તે સહત એમને જવું પડશે, પણ કાર્યક્રમ આપણે કન્ટિન્યુ રાખીશું. આઈ વુડ રિક્વેસ્ટ kindly be seated. Thank you so much, sir, for joining us. Shri T.L. Patel. Can we have a round of applause, ladies and gentlemen?